Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. So I know it's festive season, and you guys might be feeling, lazy and not studying, giving up, and most of you might be feeling homesick, right? Because you might not be going to home. But thing is, this is what UPSC wants. They want to test your level, your patience, your consistency, your hard work, right? And this is exactly where you have to work. So please do not give up, do not lose hope, right? And do not, feel tired. So make sure that you are working with this thought. I know this is a journey which is asking you to give up many, many things, and it might be very hard, to process all this. But this is exactly what you basically test. So make sure that you are not giving up and you are working with this thought. So I know this is a festive season, you might not be feeling like studying, but then again, current affairs need consistency and you cannot break it. So this is why we are going to start with our current affair with this amazing thought. So now let's move to our first current affair, what it is saying and what it can like come in prelims and okay. Let's see what our first current affair is telling to us. So it says Iran-Israel conflict. Okay, all the highlights we are going to discuss. So we'll be discussing all those things also from the US side which nobody is talking about. Okay? We'll try to bring all the approach here. Okay? So CRC के साथ में लेकर we are going to discuss that why US is interfering. Okay? Interference के साथ में we'll discuss what Iran and other countries can have impact on this news. चलो अब देखो अगर हम बैक स्टोरी की तरफ जाएंगे तो क्या समझ में आया था that Iran and Israel they are like fighting, they have a big conflict. In the last class we have understood this. ठीक है? क्यों? क्योंकि ईरान को लगता है इसराइल को लगता है कि ईरान इज बिकमिंग टू पावरफुल, राइट? एंड इट मे लाइक डेवलप वेरी डेंजरस वेपन और डेंजरस वेपन के यहाँ पर बात हो रही है. सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द रीजन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजिंग. ठीक है, अब इस पे ईरान का रिएक्शन है दैट इज आल्सो कमिंग वेरी हार्श. ठीक है, दे सेड that I am just protecting myself. ठीक है, so this is an attack to our sovereignty. ठीक है, हमारे decision making पर attack हो रहा है. We being split country, how could they interfere in this, right? So to this what happened, Iran responding by launching missile toward Israel, right? और उन्होंने यूएस मिलिट्री के भी बेसिस को टारगेट किया. ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड कि कहां कहां पे टारगेट किया, राइट? क्या क्या मिसाइल्स यूज करी, राइट? वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द रिस्क, राइट? इसकी वजह से जो सिचुएशन है दैट हैज बिकम वेरी वेरी डेंजरस, राइट? जैसे कि डोमिनो इफेक्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द होल रीजन इज लाइक टेंस बिकॉज़ ऑफ दिस, राइट? ईरान इज फ्रेंड लाइक हिजबुल्लाह, है ना? तो इजराइल हैज सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. सो इट्स लाइक टू गुड मॉर्निंग मैम. सो इन दो साइड्स के साथ में वी हैव लाइक सीन द डिवीजन आल्सो, है ना? तो इसी डिवीजन के साथ साथ में जो कंट्रीज है, मेनी कंट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिडल ईस्ट, राइट? सो दे आर नाउ ऑन अलर्ट, क्योंकि अगर साइड ले चुके हैं तो नाउ दे हैव टू स्टैंड, राइट, विद द अलाइन्ड कंट्रीज ऑफ दिस. सो दिस मींस अ रीजनल वॉर कैन हैपन, राइट? इट कैन स्टार्ट. ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट बिटवीन टू कंट्रीज एनीमोर. ठीक है, सिर्फ दो कंट्रीज के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कंट्रीज जो एक साथ में अलाइन्ड है. Basically they are helping each other, right? So this is not just a fight between Iran and Israel, but it is a bigger geopolitical conflict that is involving many countries here. ठीक है, ये बेसिक स्टोरी हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो no one is talking about, right? So we know that Israel carried out attack, right? air strikes हुई वहां पर, right? उसमें हमारा जो ईरान का मिलिट्री था, न्यूक्लियर रिलेटेड टारगेट्स थे, दैट वाज बेसिकली केम, राइट? ईरान ने इस चीज पे रिस्पॉन्ड करा मिसाइल और ड्रोन अटैक से. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने इस चीज को सपोर्ट करा एंड आल्सो इंक्रीज देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन गल्फ रीजन आल्सो, राइट? सो ईरान बैक्ड ग्रुप्स जैसे कि हमारे पास मिलिटेंट्स हो गए, राइट? ऐसे रीजन्स में उन्होंने वहां पे बैकअप दिया, राइट? एंड दे आर आल्सो थ्रेटनिंग टू जॉइन द फाइट्स टू दिस. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? जिसकी वजह से हमारा क्रिएट हो रहा है डेंजर ऑफ फुल स्केल रीजनल वॉर दैट कैन हैपन एनी टाइम इफ दिस वॉर कंटिन्यूज. ठीक है, इतनी कहानी तो सबको पता है ना? अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट एशिया है ऑलरेडी इतना सेंसिटिव ओरिजिन में चल रहा है ना? कंफ्लिक्ट जो है ऑलरेडी इतने ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. इजराइल और पैलेस्टाइन का हमारे पास में वॉर चल रहा है. देन वी हैव लाइक कंफ्लिक्ट विद ईरान एंड इजराइल नाउ, राइट? सुन्नी और शिया का जो हमारा टेंशन है वो इतने टाइम से लाइक इट्स लाइक फॉर इयर्स, वो हमारा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, राइट? तो गल्फ की जो कंट्री की जो राइवलरीज है दैट आल्सो कुड बी सीन ओवर हियर, राइट? तो अगर ये जो कंफ्लिक्ट है, इफ दिस कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, व्हाट विल हैपन? इट कैन बिगिन इनटू लार्ज रीजनल वॉर, राइट? तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, राइट? तो व्हाई डज द वर्ल्ड केयर अबाउट दिस वेस्ट एशिया?
क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल सप्लाई की, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी, राइट, वेस्ट के पास में हैज लाइक ह्यूज, राइट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स है उनके पास में, राइट, सो कंट्रीज आर लाइक डिपेंडेंट ऑन ऑयल ऑन देम, राइट, इस रीजन पे हम लोग पूरा के पूरे तरह डिपेंडेंट है ऑयल पर, राइट। तो एज आई सेड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, अगर कंफ्लिक्ट होता है, राइट, और कोर्ट्स पर या फिर ट्रेड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सो इवन पीपल सिटिंग एट योर प्लेसेस, ठीक है, आप लोग इंडिया में बैठे हुए, दिल्ली, मुंबई, राइट, विल बी आल्सो इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद में अगर ट्रेड रूट्स की बात करें तो हमें समझ में आता है दैट इंपॉर्टेंट सी रूट्स आर देयर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज देयर, राइट, रेड सी रूट है वहां पर, तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो हमारा इसी सी रूट से जाता है ना। अगर यहाँ पर हार्म होता है इन ट्रेड रूट्स को, तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस इकोनॉमिकली इन अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई थी। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी तो क्या हुआ था कि यहाँ पे कोई भी वोट जो है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है ना, ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट करने वाला है, उसके साथ साथ में जो हमारे इंटरनेशनल पॉलिसीज है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, राइट। ये चीज जो थी हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अब आती है इंडिया की बारी, राइट। सो इंडिया इज नॉट फाइटिंग बट इट इज गोइंग टू बी डीपली अफेक्टेड, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this is going to increase our oil prices, ठीक है। India imports most of its like oil from West Asia, right? If this war happens, what will happen? हमारा जो ऑयल का सप्लाई है that will reduce, right? जो हमारे प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, उसकी वजह से और क्या क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, so after this what exactly do we have? We have this India diaspora system, right, this safety, so millions of Indians are living in that Gulf countries, ठीक है। although ने बोल दिया गया था एक हफ्ते पहले ही जब ये चल रहा था that you have to vacate these places, but then again people being people, right, they were just being arrogant, rude, whatever you can call them, they didn't vacate their places, right। तो थोड़ी इश्यूज हुए, but then again India was very successful उन्हें बाहर निकालने के लिए, right। तो अगर ये स्प्रेड होता है और ज्यादा, राइट, उनका सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट में वी नीड इवैक्यूएशन मिशंस आल्सो, राइट, जैसे कि हमारे पास में पहले ऑपरेशन गंगा, राइट, ऑल दीज ऑपरेशंस वर देयर, राइट, इन इवैक्यूएशन, तो वापस से फिर हमारा पूरा का पूरा जो है डाइवर्ट हो जाएगी अटेंशन वहां पे, राइट। तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया को इन लार्ज अमाउंट इज गोइंग टू अफेक्ट, ठीक है। अब देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स व्हिच नो वन इज टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू यूएसए एंड इजराइल एंड ईरान, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यूएसए की साइड की, ठीक है, तो द यूएस डज नॉट वांट अ फुल बिग वॉर, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये बात समझ लो कि उन्हें फुल बिग वॉर चाहिए ही नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट है, राइट। और नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली अगेंस्ट क्यों है, राइट। तो अगर कोई भी बड़ा वॉर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो रीजन एज यूजुअल हमारी तरह वहां के प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे ऑयल की, राइट, दैट ऑयल प्राइसेस विल एक्सप्लोड, राइट। So global economy will crash because of this, right? Now many countries are involved in this, right? So it can become what? It can become like World War like situation, right? So what does US is doing? US is allowing small tension and small attacks, right? But it is stopping doing what? It is stopping happening this big this war, ठीक है। ये huge amount का basically जो war है, from that it is basically stopping us to happen, ठीक है। तो ऐसे सोच के चलो कि there is a teacher in classroom, right? So two students are fighting with each other. So teacher is letting them argue a little, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए दे रही है, but it stops them from they seriously hurt each other. क्यों? Because the teacher says that I am needed here to control the class, right? So for the US it's like small conflict हो रहा है, तो इसका मतलब ये है they have the reason to keep army and bases in where? In Middle East, ठीक है। एक कंट्रोलिंग पावर है उनके पास में। अगर कोई बड़ा वॉर होता है, if any big war happens, so what will happen? It is like dangerous for everyone, right, including US also, right? So the strategy becomes here what? So keep the conflict alive over here, right, but you have to keep it under control, ताकि क्या मिले तुम्हें? डोमिनेंस मिलता रहे, पावर मिलती रहे, राइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यूएस इज समवेयर डूइंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक यूएसए की साइड से स्ट्रेटेजी वाइज इतनी सी है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डिग्निटी, वी हैव टू प्रोटेक्ट माय पावर, राइट, क्योंकि अब इसमें जो है सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, राइट, दे हैव लाइक टेकन द साइड, और उसी के साइड में चलते हुए यूएस आल्सो हैज बेसिकली डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं अपने तुम्हारे थोड़ा सा कंप्लीट करने दूंगा, बट देन अगेन आई विल नॉट लेट दिस बिग वॉर हैपन, ओके। अब इसके बाद में देयर इज अनदर पॉइंटर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिक्योरिटी डिपेंडेंस की अगर हम बात करें
तो यूएस यहाँ पे कहाँ अलाइन होता है, कहाँ खड़ा होता है? सो देखो, it likes they have this strategy that make other depends on you. Kaise? Ab now you can think about other countries like Iran is there, Saudi is there, right? UAE is there, right? So all these countries are there, right? So now they are feeling that Iran is threatening to us, right? So they basically ask the question that what do I do, right? So they go to the US and they say that please give us weapon protection and all the military support, right? And US is basically providing them, right? So US basically is providing them fighter jets also, right? Military bases also, and providing security guarantees also, right? So slowly what's happening, these countries become dependent on the US security. Iska matlab kya hai, that they cannot easily go against the US, right? They cannot go easily leave the US alliances, right? So indirectly what it is the more fear of Iran, the more power for the US in that region. ठीक है, तुम मुझसे हेल्प ले रहे हो, बदले में यूएस को भी प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम दोज कंट्रीज, ठीक है, बिकॉज दोज कंट्रीज विल नेवर एवर गो अगेंस्ट यूएस एनीमोर, ठीक है. तो इट्स लाइक अ स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है. इतनी कहानी समझ में आई कि कैसे सिक्योरिटी डिपेंडेंस को यूज कर रहा है यूएस अगेंस्ट ईरान, ठीक है, टू हैव दिस पावर. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, देयर इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आल्सो दैट इज हैपनिंग इन यूएस, ठीक है. अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इट इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज रोल इन दिस कंफ्लिक्ट, ठीक है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हिडन पार्ट है दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है. सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेटेजी एनीमोर, दैट इज नॉट ओनली अबाउट कंसर्न एनीमोर, राइट. इट इज अबाउट वोट इनसाइड दैट कंट्री आल्सो. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इंटरनली वहां पे उस कंट्री में चल क्या रहा है. सो if we talk about the US, right? So many people strategically like and strongly they support Israel. So Israel को क्यों सपोर्ट करते हैं? पहला तो है पॉलिटिकल लॉबिंग ग्रुप, ठीक है. तो these are like powerful organization that we are talking about, right? जो जिनके इन्फ्लुएंस है इन लीडर्स का, ठीक है. तो दूसरा रीजन ये है कि जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं यूएस के लोग, दैट इज रिलीजियस बिलीफ आल्सो, राइट. So some Christian groups, right, they believe supporting Israel is religiously important, ठीक है. बिल्कुल जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स है, they are supporting Palestine, right. So same goes with those people living in USA, they are supporting Israel, ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इलेक्शन क्यों है? सो लीडर्स बेसिकली वांट वोट्स, ठीक है. तो दे आर बेसिकली सपोर्टिंग देयर वोटर्स, जैसे कि यूएस समटाइम्स these leaders support Israel not because of the strategy but because they want to have this these votings, right. So this whole scenario of supporting Israel is somewhere not like the old aspect I'll say, but somewhere is linked to what is to link to the voting system that is present in the US election, ठीक है, जो भी हाल ही में होने वाले, ठीक है. दिस इज द अनदर रीजन. दूसरी एक और चीज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो एक कंसेप्ट हो रहा है शरिया और सुन्नी का, ठीक है, समझ में तो आया होगा, तुमने पढ़ा होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस शरिया, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ गाइडलाइंस फॉर हाउ मुस्लिम शुड लाइक लिव देयर लाइफ, राइट. सो इट कम्स फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम कुरान, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट होली बुक हियर, राइट. सो दिस इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम कुरान, बल्कि हदीस से भी आता है, राइट. तो इस्लामिक जो स्कॉलर्स है, राइट, हमारी जो इंटरप्रिटेशंस है, राइट. सो शरिया बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट हाउ टू प्रे, हाउ टू डू बिजनेस, फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, मॉरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट. ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली मेंशन इन हियर, राइट. तो शरिया का मतलब अगर आसान शब्द में समझा जाए तो इट मींस इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, राइट. एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल सिस्टम है, ठीक है. तो ये है शरिया, ठीक है. अब ये सुन्नीस कौन है? सो दीज आर द टू मेजर्स ग्रुप्स इन इस्लाम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. सुन्नी की बात करें, सो वी हैव लाइक 80 to 85% ऑफ पीपल ओवर हियर, ठीक है. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सुन्नी की बात करें तो दे आर द टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है. सुन्नी जो हमारे पास में 85 to 90% है, राइट. सो अगर हम शिया की बात करें तो दीज आर सुन्नी मुस्लिम्स. ये क्या फॉलो करते हैं? ये बेसिकली फॉलो करते हैं द लीडरशिप ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, राइट. जो हमारा थ्रू इलेक्टेड दे केम, राइट, एंड दे वर एक्सेप्टेड लीडर्स, ठीक है. जो हमारे कैलिफ्स वगैरह है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है. तो जो मोस्ट सुन्नी की जो पॉपुलेशन है, राइट, इज सऊदी अरेबिया या फिर गल्फ कंट्रीज से है, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, राइट. तो this is a political and religious issue that is mixed together, right. अब why many Sunnis oppose Israel? क्यों oppose करते हैं वो इजराइल को?
because of Palestine issue. ठीक है, लैंड ऑफ पैलेस्टीन ऑलरेडी लाइक विच इज अ होली प्लेस इन इस्लाम, राइट, इट्स एग्जिस्टिंग देयर, ठीक है. जेरूसलम की अगर हम बात करें तो वहां पर वो प्रेजेंट है, राइट. तो हमारा जो अल अक्सा मोस्क है, राइट, दिस इज द थर्ड होली साइट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इस्लाम, राइट. उसकी वजह से दे आर बेसिकली नॉट सपोर्टिंग इजराइल, राइट. तो बहुत सारे सुन्नीज को, मेनी सुन्नीज बिलीव्स दिस दैट दिस लैंड शुड बिलोंग टू पैलेस्टीन, राइट. सो मेनी ऑफ whom are what, they are Muslims. लेकिन सारे के सारे मुस्लिम्स ऐसा बिलीव नहीं करते हैं, राइट. सारे सुन्नीज बेसिकली ऐसा नहीं सोचते, नॉट ऑल सुन्नीज बेसिकली थिंक द सेम. So earlier what was happening, many Sunni countries, right, they were like strongly against Israel, right. And ab jo hai, but now what is happening, some Sunni countries have like changed positions, right. So we have like Morocco, we have UAE, right. So they now have normal relations with Israel, right. Trade में भी है, diplomacy में भी है, right. So they have interacted with Israel properly, ठीक है. लेकिन there is this other portion of Sunni जो कि अभी भी Israel के against है, right. अभी भी वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट लेकर चलते हैं. तो अभी अगर हम सुन्नी की बात करें, सो वी हैव दिस डिवाइडेड व्यू टुडे, ठीक है. तो सबसे पहला तो हमारे पास में दिस रिलीजियस व्यू, ठीक है. तो इमोशनल रिलीजियस व्यू ये है कि दे आर सपोर्टिंग, दे हैव टू सपोर्ट पैलेस्टीन, राइट. पॉलिटिकल व्यू क्या है, पॉलिटिकल व्यू इज दैट सम कंट्रीज कोऑपरेट विद इजराइल, राइट. उसके साथ में इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स, राइट. यू हैव सीन राइट नाउ आल्सो कि कैसे इस्लाम सॉरी लखनऊ में देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स हु आर बेसिकली going through this emotional backdrop, because क्यों ऐसा जो ईरान में हो रहा है, right, जो conflict हो रहा है, because of that, right. So this Sunni concept of India, so there is no single thing Sunni view of India, right. It totally depends on different groups and totally depends on different contexts that we are seeing, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजियस व्यू की, so what exactly we are talking about here, so India is seen as a non Muslim majority country, ठीक है. मतलब इट्स लाइक इस्लाम पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, राइट. सो दिस इज नॉट अ लाइक कंप्लीट मुस्लिम लैंड, राइट. सो सच लैंड्स वर लाइक समटाइम्स कॉल्ड दर उल हर्ब, राइट, दैट इट इज नॉट रूल्ड बाय इस्लामिक रूल, है ना. बट दिस इज ओल्ड मेडिवल क्लासिफिकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हम मॉडर्न मुस्लिम्स की बात करें तो नाउ दे थिंक नॉर्मली, राइट. बट बहुत सारे सुन्नीज ऐसे हैं दे सिंपली सी इंडिया एज लाइक अ नॉर्मल कंट्री विद मुस्लिम्स लिविंग फ्रीली, राइट. अगर हम पॉलिटिकल व्यू की बात करें, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, some Muslims, right, सबकी बात नहीं हो रही है, some Muslims may criticize India on issues जैसे कि हमारा कश्मीर हो गया, minority rights हो गया, right, but many others are there who are respecting India as like democracy, right, and they have like normal relations, right. So also you have to remember this one important thing, that India has one of the largest Muslim population in the world, ठीक है. अगर हम इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स की बात करें तो सुन्नी मुस्लिम्स दैट आर लिविंग इन इंडिया आर लाइक सिटीजंस ऑफ इंडिया, राइट. They are following Indian constitution, they are practicing Islam privately, right, but most of them, right, they are like working also, they are studying also, they are living also, they are living their normal life also. So they are not following this global political agenda that we are seeing around, right. सबसे पहली बात तो ये समझो that we are not talking about majority of the Muslims who are basically going against the India, right. तो अभी जो कंफ्लिक्ट हो रहा है that's because of this religious view only. सबसे पहला कंफ्लिक्ट जो हमारे है, right, even if we talk about this Indian Muslims, so this is only and only because of the concept of Shia and Sunni, ठीक है. Okay, now here is one question for you, write down the answer. So Israel consider Iran's nuclear program as an existential threat, बिल्कुल, ठीक है. So this one is correct, right. The Strait of Hormuz connects the Red Sea with the Mediterranean Sea, ठीक है. तो ये गलत है क्योंकि Strait of जो हमारा Hormuz है, that does not connect the Red Sea and the Mediterranean, right, बल्कि वो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, right, with the Gulf of Oman, ठीक है. पिछली क्लास में बताया था. So this is incorrect. The United States maintains military bases on Gulf countries, बिल्कुल. So what is the correct answer that we have? We have option A, that is 1 and 3. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? I am not seeing answers in the chat box. इतना तो मुश्किल नहीं था यहाँ आंसर. चलो, now let's move to another news of today, that is 16th Finance Commission misses and concerns. Okay. Very important news. ऐसे इमेजिन करो कि इंडिया एक बहुत बड़ी फैमिली है, राइट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक द फादर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. और दिस फादर बेसिकली अर्न्स मोस्ट ऑफ द इनकम, राइट. सो स्टेट्स व्हाट आर दे आर लाइक द चिल्ड्रन, ठीक है, who need money to run their own houses, जैसे schools हो गए, roads हो गए, right, we are talking about hospitals here, right. तो हर 5 साल में every 5 years the father basically sits with a neutral advisor, right,
who is going to decide that how should I distribute my income among all the children fairly, right? So this advisor is known as what? It is known as 16th Finance Commission. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 16th Finance Commission. अभी न्यूज में क्यों है? Why we are talking about this? We are talking about this because जो हमारा नया फाइनेंस है, there are some problems in it, right? कुछ मिसेस हैं, कुछ बेसिकली कंसर्न्स हैं that we are going to cover in here, right? और जो कंसर्न है that is basically that how we should distribute the money, right? हम लोग सेंटर और स्टेट में मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है? सो पहले समझेंगे कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, क्या when it was created. So when we talk about this finance commission, this is very much needed, right? So we are talking about article 28E here of the constitution, right? So it is created under this article, right? And इनका job जो है basically recommend करना है that how taxes are shared between center and state, right? उसके बाद में how many is basically shared among states, right? And how much it should be like granted to the state, right? फंड्स को कितना देना चाहिए, पंचायत को कितना देना चाहिए, म्युनिसिपल को कितना देना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय हूम? बाय दिस फाइनेंस कमीशन, ठीक है? इतनी कहानी हमको पता है, ओके? नाउ अभी न्यूज में क्या है? द न्यूज इज अबाउट 16th फाइनेंस कमीशन, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अरविंद पनागरिया, राइट? And this is the news between 2026 and 2031 we are going to discuss कि exactly जो यहाँ पे changes आए हैं, right? Whatever they have given to us, right? Is it problematic for some states or not? ठीक है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है that is basically fairness versus performance that we are going to discuss, ठीक है? पहली प्रॉब्लम हमारे पास में fairness versus performance, ठीक है? तो now what exactly we are talking about? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विटी की और एफिशिएंसी की, ठीक है? इक्विटी एंड एफिशिएंसी. Equity means barabari, right? That we are talking about equality in here, right? Efficiency means who are in requirement of such things, ठीक है? जो requirement की बात हो रही है, right? किसी को अगर किसी चीज की need है, right? So now what exactly is the problem? The problem is basically some children are poor, right? Some are very hardworking. So this some is who we are talking about states here, right? And some are successful, right? So now the father, the basically center is deciding that give more money to poor children. It means what? Equity, right? Or reward hardworking children. Then what we are talking about here? We are talking about efficiency here. ठीक है? So this is the problem. This is the scenario that we are going through. ठीक है? कि इनके बीच में maintain करके कैसे रखना है, distribution किस वे में होना है, right? So if we talk about this real scenario, so it's like that we need more help to develop, right? So this is what developed states are saying, right? We worked hard, right? We are like being punished. Why? क्योंकि हमें उतना revenue, हमें उतने पैसे नहीं दिए गए हैं जितने हमें देना चाहिए था, right? So equity is what? Equity is helping those weaker states, right? Efficiency is what? Efficiency is basically rewarding those performing states, right? So this challenge is basically what center is coming up with, ठीक है? दूसरी problem, the another problem that we are facing is old formula versus new India, ठीक है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अब पहले हमारे पास में जो फाइनेंस कमीशन थे, दे यूज्ड टू यूज फैक्टर्स जैसे कि हमारा इनकम पॉपुलेशन हो गया, इनकम लेवल हो गया, डेवलपमेंट गैप हो गया, राइट? ये ऐसे यूज करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू हैपन, ठीक है? इस बेसिस पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, राइट? अगर हम आज की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन व्हाट? वी आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑन बेसिस ऑफ जीएसटी, ऑन अर्बनाइजेशन, ऑन चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड सर्विस इकोनॉमी. कि जीएसटी का कितना इंपैक्ट हुआ है, राइट? एक स्टेट में कितना इंपैक्ट दिया उस पे, राइट? आफ्टर दैट अर्बनाइजेशन की कितनी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है एक स्टेट पर, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज डन. चेंजिंग डेमोग्राफिक्स यानी कि पॉपुलेशन पे, राइट? पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्चा होगा, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू अस, राइट? सर्विस इकोनॉमी की अगर बात करें तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज, राइट? उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. दिस इज द रियलिटी, दिस इज द न्यू पैटर्न दैट वी हैव कम अप विद, ठीक है? So what basically this news is telling to us that commission must update its formula for new Indian realities, ठीक है? This is the problem that we are facing right now. Problem किसके बीच में? The problem is between equity और efficiency. Okay. अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें, the third problem is fiscal discipline और हमारा free grants, ठीक है? Fiscal discipline and free grants, ठीक है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? The problem is that imagine that if one child is there, right, and that child is spent like wisely, right, and another is basically wasting money, right? So you tell me that should like both the children should get both equal money? No, right? So same issue is happening in India, right? Some states are there who are maintaining fiscal discipline properly, right? अपना debt भी control करके चल रहे हैं, right? But there are some states who are like taking loans, ठीक है? Basically they are running on high deficit, right? So the question arises here: should irresponsible states still get more money, right?
तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि एग्जैक्टली किस बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसके बाद में व्हाट इज द अनदर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग अराउंड, तो हमारा जो सेंटर और स्टेट की टेंशन है दैट राइट, इसका मतलब है फेडरल इशू वी आर डिस्कसिंग अबाउट। ठीक है, ठीक है, अब सेंटर का काम क्या है, सेंटर्स वर्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी राइट अमंग व्हाट, अमंग स्टेट्स राइट, सो आर स्टेट्स अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, दैट विल डिस्कस अबाउट। ठीक है, अब अब ना देखो क्या होता है कि if father basically keeps more money for himself, right, so children will feel like angry, right, so some state are fearing that center may keep more taxes share, right, they are going to reduce state's financial power also, and because of this what will happen, this will affect our cooperative federalism। ठीक है, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है बिटवीन दिस सेंटर एंड द स्टेट राइट, दैट विल बी अफेक्टेड इन हियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देयर इज दिस फिफ्थ प्रॉब्लम आल्सो, द फिफ्थ प्रॉब्लम इज लोकल बॉडीज। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की कैसे, सो नाउ वी नो दैट मनी मस्ट लाइक आल्सो रीच टू पंचायत आल्सो। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज के पास में भी जाना चाहिए राइट, सो दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे सो दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। क्या क्लैरिटी है कि कितना ज्यादा पैसा जो है लोकल बॉडी को जाना चाहिए राइट, दैट हाउ मच फंड्स लाइक लोकल बॉडी शुड गेट राइट, एंड हाउ दे विल बी स्ट्रेंथन इन द कमिंग टाइम आल्सो राइट। तो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, देयर आर सम स्टेट्स हु आर अनहैप्पी विद इट राइट, एंड वी अंडरस्टूड कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर और स्टेट की टेंशन चल रही है राइट, लोकल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है राइट, सो दैट वी हैव डिस्कस कैसे, पहले हम लोग अलग फॉर्मूला यूज करते थे, नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, urbanization के basis पे, demographic के basis पे, right? So now we have seen in this commission that there are few changes in the distribution of the money, on the distribution of the funds. ठीक है, अब there is some important concept that you have to understand. पहले तो vertical समझो, okay, अगर हम लोग vertical devolution की बात करते हैं, what it means? Now we know that center is there, right? और center को basically पैसा distribute करना है, think it of as like 100, right? And they have decided that we will be distributing this 40%, right? हम ये 40% जो है we are going to distribute to the state, right? So this distribution to states, right? This is known as what? This is this is understood to you, this is understood to you कि exactly distribution कैसे होता है। Understand from this we understood कि फाइनेंस कमीशन जो है that came like in 1951 right, और ये हर 5 साल में फॉर्म होता है राइट, और ये फाइनेंशियल बैलेंस जो है इन फेडरेशन इट मेक श्योर दैट इट इज अकरिंग देयर। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो 2014 में क्या क्या डिफरेंस था, प्लानिंग कमीशन जो है हमारा रिमूव राइट, so now there is this new finance commission right, this is the main body for fund distribution right, so GST is introduced like 2017 we are talking about right, so it changed tax completely right, जो अभी हमारे पास है सेंटर बेसिकली कलेक्ट जीएसटी राइट, स्टेट्स के साथ में वो हमारा जीएसटी कलेक्ट करती है, एंड देयर शेयरिंग सिस्टम इज लाइक टोटली डिफरेंट नाउ। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फाइनेंस कमीशन है राइट, देयर जॉब इज लाइक मोर कॉम्प्लेक्स नाउ। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक न्यूज ऑफ हियर। Okay, selective outrage on Supreme Court and NCERT textbook, very very important for you. I'm sure that you have heard of this NCERT concept. ठीक है, last class में भी मैंने बताया था that NCERT basically is deciding that will be removing some portion to it. ठीक है, now we are going to talk about Supreme Court. ठीक है, कि Supreme Court यहाँ पर क्या कर रहा है, basically what exactly happened in here. तो यहाँ पर सिलेक्टिव आउटरीच की बात करी है कि सिलेक्टिव आउटरीच किसकी तरफ, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव आउटरीच टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो
Imagine there is a classroom, right, and teacher is basically teaching students about like how courts work in India, ठीक है. अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, राइट. तो यहाँ पर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि समटाइम कोर्ट्स फेस प्रॉब्लम्स, जैसे कि करप्शन हो गई, डिलेज हो गई, राइट, केसेस की शॉर्टेज, राइट, बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, राइट, दैट इज हैपनिंग, राइट. जजेस की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस हो रही है. इन द प्रीवियस क्लासेस ओनली वी हैव लाइक अंडरस्टूड दिस, ठीक है. कुछ दिन पहले हमने ये शॉर्टेज ऑफ जजेस के बारे में पढ़ा था, राइट, दैट वी हैव सो मेनी केसेस, लेकिन जजेस की वैकेंसीज जो है अभी भी खाली पड़ी हुई है, राइट. We have heard about it, right? But now suddenly some powerful people get angry to this, right? What exactly is happening? They are asking the question that how can you talk about corruption in the judiciary, right? This is wrong, right? This is what basically Supreme Court said कि तुम corruption के बारे में बच्चों को कैसे बता सकते हो, है ना? ऐसी चीजें कैसे बता सकते हो? So this matter basically goes to the Supreme Court of India, right? Now courts become very strict, right? And what Supreme Court says that this book cannot be used, right? Why? Because it is basically it is damaging the image of judiciary, ठीक है. So the book that is made by the NCERT is stopped or it is withdrawn, ठीक है. Basic कहानी हमारे पास में इतनी है, ठीक है. Now we are going to understand more and more कि what exactly this news is telling to us. So this news is basically asking that why is this outrage so biased, right? Why do we have this selective outrage, ठीक है. This is the purpose of this news, to basically try to have the answer, ask the question, deliver the situation, right? So that we are going to understand, ठीक है. Now talking about problems in the institution, right? This is not new. Just last week we have covered this news कि कैसे judiciary में we have seen lack of judges, vacancies इतनी खाली पड़ी हैं, there are so many cases which are not solved yet, right? And we talked in numbers also, है ना. So many reporters, judgment, commitments, they have already discussed these problems. It means what? If we are talking about numbers, if we are discussing in current affairs, if judges are also discussing this, it means that this problem is existing. कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत नया बोल दिया, right? So even judges themselves have spoken about these issues earlier, right? So this news basically asks the question that why suddenly so much anger now? अभी इतना बवाल क्यों उठ गया इस न्यूज पर, right? तो अभी क्या हुआ इस न्यूज पर? A class 8 NCERT social science book mentioned that judicial delays are there, corruption issues are there, shortages of judges are there, right? After this, what happened? Supreme Court basically, took that suo motu action, right? कि हम खुद से जो है देखेंगे, right? We'll direct our judges ourselves, right? So this book was withdrawn from here, right? So NCERT said it was an error in judgment to this. ठीक है? This is what NCERT replied to the judgment of Supreme Court. ठीक है? अब यहाँ पर क्या है आर्ग्यूमेंट? क्या है आर्ग्यूमेंट? है यहाँ पे कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट इन है दैट क्रिटिसिज्म डज नॉट मीन दैट वी आर डिसरिस्पेक्टिंग, ठीक है. सबसे पहली चीज तो ये समझो, right? So exactly what we are talking about, if we are criticizing Supreme Court, right? Democracy is what? Democracy is where we are discussing about we are discussing about the lack of injustice, right? We are discussing about the problems that we are facing, right? So parliament can be criticized, जुडिशरी जो है वो भी तो डिस्कस हो सकती है, राइट? सो डिसरिस्पेक्ट ये तो नहीं होगा ना कि हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट? रिस्पेक्ट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू बी साइलेंट ब्लाइंडली, राइट? सो इफ students don't learn about real issue, right? So how they will be aware of the big issues that are happening in the society, how they will be a good citizen, right? So this is the first argument that is coming up with, ठीक है, कि argument का मतलब ये नहीं है कि हम लोग disrespect कर रहे हैं, ठीक है. Another argument is danger over protectionism. Okay, very important concept. Okay, so now danger over protection, इसका मतलब क्या है कि if we say that do not talk about judiciary problem at all, right? So slowly what will happen? जो हमारी freedom है to basically speak, right? So now we know that federalism is there, right? State की power divided है, center की power divided है, right? We are also eligible, we being citizens are also eligible, right? To remove the government, है ना हमारे पास में हक, right? तो हमारा जो फ्रीडम है that is going to be reduced slowly and steadily, right? अगर यही हाल चलता रहा तो, right? अगर सुप्रीम कोर्ट यही चीजें करती रही तो, right? So this is like debate, this basically honest debate that is going to stop our freedom, right? Students are going to get half knowledge out of it, right? So this is going to weak what? This is going to weak our democracy ahead. Okay? So this is the another problem that we are facing, ठीक है. उसके बाद में argument 3 is there, that is selective outrage, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? News is basically, this news is asking the question that why outrage only in this case, right? Because court themselves accept backlog problems, ठीक है. गवर्नमेंट ने कितने सारे डिलेज ऑलरेडी मेंशन किए हैं, ठीक है. मीडिया की जो डिबेट है, राइट, जो इन्हीं चीजों पर इन्हीं बेसिस पे होती है, तो फिर वहां पर क्यों नहीं उन्होंने सवाल उठाया, राइट? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी ओनली,
ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, नाउ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बिकॉज टुक एक्शन अगेंस्ट एनसीईआरटी, राइट, दे हैव withdrawn, they have like stopped using that NCERT portion. So now the question arises, जब हम लोग जुडिशरी की और बैकलॉग की बात कर रहे हैं, तो why we are not solving that problem, why we want to remove the concept of this being talked about, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की, तो क्या क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, just because we are criticizing it doesn't mean that problem is not there, it is existing, that is why this news is coming to us, ठीक है। we also have covered so many portions where we have seen that judiciary is lacking in so many places, ठीक है। अगर यही चीज चलता रहा कि हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, so this is going against what, this is going against the concept, the constitutional right that we have, that is of freedom of speech, हमारा हक हमसे छीन लिया जाएगा, right। after that academic freedom also, students are there, why they are doing basically studying that, to be aware of the India, right, the problems we are lacking in, right. So we teachers and students should have freedom to discuss real issues, right, and we should have freedom to think critically, that is also being taken away from us, right. This is the another concept of constitutional principle। उसके बाद में separation of powers also, ठीक है। अब there are 3 organs, legislature is there, executive is there and judiciary is there, right। हर किसी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, right, but we should like be open to accountability also, ठीक है। responsibility तो तुम लोग उठाओगे ना, right, if you are basically there, so and you are criticizing each other, but you have to take responsibility also, right। so this is the another step that we have, right। उसके बाद में there is another concept that is judicial dignity versus public scrutiny, मतलब दोनों के ही बीच में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, right। so we have to maintain trust also justice system में, right, and we have to avoid this one sided view over here, ठीक है। I hope this is understood. Okay. जो हमारा कोर्ट एक्शन है, राइट, दिस अगेंस्ट कोर्ट एक्शन वी टॉक अबाउट, दिस इज लिमिटिंग आवर एकेडमिक फ्रीडम, राइट। हमारा जो ऑनेस्ट डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड इन हियर, राइट। हमारी जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है दैट इज गोइंग टू बी हाइड, राइट। सो वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम लोग उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय वी आर बेसिकली हाइडिंग इट, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट लेस नॉलेज, दे आर नॉट गोइंग टू गेट फुल नॉलेज, हाफ नॉलेज मिलेगी उन्हें यहाँ से, राइट। if there is a system which is lacking some problem, those people, those students should know that what exactly they'll be facing problem and they'll be out of the school, एक टाइम पे तो उन्हें सिस्टम को फेस करना पड़ेगा ना, राइट। सो वी शुड make them aware so that changes can be brought, as their future we are talking about, youth we are talking about, right। so we should like think up with the longer approach, but यहाँ पर वही बात की गई है इस न्यूज में कि how selective outrage is there when it comes to Supreme Court, ठीक है। अब criticism basically strength democracy also, right, so we are not weakening it, क्यों, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन ही तो बेसिकली उससे इंप्रूव हो रहा है, राइट, as we are going to increase transparency also, right, we are going to build public trust also, right, as many of the people said that criticism is very much necessary, criticism नहीं होगा, rivalries नहीं होगी, this war will not happen, तो फिर अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो revolution कहाँ से होगा, revolution only and only happens when we are basically going through stages, और ये स्टेजेस ही नहीं होंगी तो हमारे पास में चेंजेस ही नहीं आएंगे, रेवोल्यूशन ही नहीं आएगा, एंड विल बी स्टक वेयर, विल बी स्टक एट वन प्लेस, राइट, देयर विल बी नो चेंजेस सीन, राइट। इफ वी विल गो टू द हिस्ट्री, विल सी दैट कॉन्ट्रडिक्शंस वर देयर, क्रिटिसिज्म वर देयर, राइट, एंड वी सो मेनी चैलेंजेस आल्सो, एंड वी हैव टू गो थ्रू इट, so this is a part of it, right, and that's exactly why we are talking about this in news कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली किया है with the NCERT books, right, जो सिलेबस भी चेंज किया, and there are like lots of things that is like happening with NCERT partially, right, they are like wrong and they should be like properly understood and handled, okay। so this is it for today, I'll see you on Monday at the same time, and leaving one question for you, right, so this is the question that you have, write the answer in the comment section, right, and I will see you tomorrow at the same time. Thank you so much, and the PDFs will be attached in the comment section in few hours. Thank you.